Hello my YouTube family, welcome back to my channel BeautyblinkwithSush, and after a long time I'm here again with a brand new video. If you're new to my channel, I make videos related to makeup, tutorials, skincare, beauty tips and tricks and much more. Today I'm recreating a look from Nora Fatehi from the song Chhordenge. I'm starting today's makeup with Sugar Cosmetics Illuminating Moisturizer. Nora has a beautiful skin and she has done a very natural makeup in this song, so I'm going to keep my makeup very natural as much as possible. After applying the moisturizer, you can see the instant shine on my face. Moisturizer के बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपना प्राइमर एज यूजुअल. प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Missclaire का प्राइमर. This is a silicone based, you can say gel based primer. Perfect for oily to combination skin. I'm applying primer mostly on the T-zone and spreading it toward the other space of my face, and I'm going to moisturize my lips again, not forgetting it. So आज मैं अपना मेकअप कंसीलर से स्टार्ट करने वाली हूँ. पहले मैं अंडर आईज एंड देन जहाँ पे मेरा पिंपल मार्क्स है वहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ. And then I'm going to blend my concealer with a beauty blender. Now, if you're watching my video for the first time, please consider to subscribe my channel and hit the bell icon. Also, if you find this video helpful, a little bit helpful, then do share this video to your loved ones. If you have pigmentation, then you have to use color corrector. I'm not going to use color corrector because I don't want that layer, as I don't have dark pigmentation. Moving on to foundation, ये है यूरोप गर्ल का फाउंडेशन that is matte and full coverage, but still blending के बाद ये मुझे satin finishing देता है, which looks very great on my skin. आप अपना फाउंडेशन ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो. I'm taking a brush to quickly blend my foundation all over my face and my neck. फाउंडेशन यूज़ करते समय डरना नहीं है. जस्ट बी श्योर यू ब्लेंड इट वेल. आपको शुरुआत में लगेगा कि ज़्यादा सफ़ेद टाइप का लग रहा है, बट देन योर बॉडी टेंड्स टू ऑक्सीडाइज एंड देन वो थोड़ी देर के बाद आपका मैच हो जाता है. इट ब्लेंड्स एंड इट मैचेस ट्रू टू योर स्किन. बट ये ध्यान में रखना है कि यू आर नॉट परचेसिंग वेरी लाइट फाउंडेशन. फाउंडेशन एक शेड ज़्यादा लाइट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. अब मैंने क्रीम हाइलाइटर उसी पॉइंट पे लगाया है जहाँ पे मुझे हाईलाइट करनी हो, एंड क्रीम कॉन्टोर फ्रॉम Krylon V21 लेके मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपना फेस टू गिव दैट डायमेंशन. ऑल्सो मैं लिक्विड लिपस्टिक्स की मदद से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एंड देन स्लोली आई एम स्टार्टिंग टू ब्लेंड. पहले कॉन्टोर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से. आफ्टर दैट आई जस्ट ब्लेंड माई ब्लश एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू ब्लेंड द हाईलाइटर. So guys, you can carry this makeup. अगर आप artist हो, you make Insta reels and videos or TikToks, then you can use this makeup in that video, like for any dance reels or dance video or anything else. अगर आप makeup नहीं करते हो, you're not a makeup person, but still अगर आपको कभी evening में कहीं जाना हो या किसी के शादी में जाना हो, तो you can definitely do this makeup. बहुत ही सटल्ड मेकअप है, सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस मेकअप. अगर फाउंडेशन में यूज़ नहीं करना है तो यू कैन स्टिल डू योर मेकअप विद द हेल्प ऑफ बीबी क्रीम. मैंने उसका वीडियो बनाया है सेपरेटली. यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड वॉच दैट ट्यूटोरियल. ओके गाइस, फटक से मैंने अपना लेंस लगाया एंड देन आई चेंज माई टॉप, और मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ अपना आईब्रोज के साथ. Myglam का आईब्रो फिलर लेके मैंने अपना आईब्रोज फिल किया है, एंड देन ट्रांसपेरेंट क्लियर मस्कारा लेके मैंने अपना ब्रोज को और ग्रूम किया है. जस्ट मेकिंग इट, अभी ट्रेंड है लिफ्टेड आईब्रोज का, वो शेप नहीं चाहिए, बस रफ मेसी आईब्रोज का. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट. आईब्रोज को ठीक करने के बाद मैका पाउडर, कंप्रेस्ड पाउडर लेके आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली सेट माई फाउंडेशन एंड द बेस मेकअप. HD रेवोल्यूशन का पैलेट लेके मैं हल्का कॉन्टोर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पाउडर कॉन्टोर. ऑलवेज रिमेंबर, आप जॉ लाइन कॉन्टोर करते हो तो गो अंडरनीथ, नॉट राइट ऑन द जॉ लाइन, एंड देन स्लाइटली नोज कॉन्टोरिंग. ब्लश बहुत ही ज़्यादा सटल है, वी कैन से नो ब्लश टाइप का ही लुक है, बट देन स्टिल मैं आईशैडो पैलेट से पिंक कलर लेके अपना ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. एंड देन सेम HD रेवोल्यूशन का पैलेट से लेके हल्का सा हाईलाइटर. एक्सट्रीम शाइन वाला हाइलाइटर नहीं है, हाइलाइटर भी नोरा का फेस में बहुत ही सटल है, सो आई एम जस्ट फॉर अ नेम सेक हल्का हाइलाइटर कर रही हूँ.
I'm applying a highlighter on all the high points of my face, and I'm going to start with my eye makeup. Again, keeping the eye makeup very minimum, I'm taking a peach color and then blending on the circuit area. Blend, blend, blend and blend. Blend करने के बाद मैं brown कलर का आई शेडो लेके वापस क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो मुझे स्मोक्ड आउट आई शेडो लुक मिल जाए। आई मेड दिस ट्यूटोरियल क्योंकि मैंने बहुत सारे यंग लड़कियों को देखा दिस डांसिंग ऑन छोड़ेंगे सॉन्ग एंड देन रील्स बनाते हुए देखा, सो आई जस्ट फील लाइक मेकिंग दिस क्विक ट्यूटोरियल फॉर ऑल ऑफ यू। Now taking a more lighter brown shade, I'm just going to apply it all over my eyelids, making a eyeshadow. अब मैं अपना falsies अप्लाई कर रही हूँ from PAC Mink Lashes. अब मैं लोअर लैश लाइन में भी वही आई शेडो लेके आई शेडो ब्लेंड कर रही हूँ टू ओपन अप माई आईज अ बिट. The same brown shade and the same transition shade that I've applied on the eyelids. You can see गाने में that she has not applied much eyeliner, so मैं बस inner corner and outer corner eyeliner wing निकाल रही हूँ. So I don't wanted that एकदम eyeliner नहीं लगाना था मुझे, but still for namesake, again giving that dimension to my eyes, providing that length to the eyes, I'm just applying the outer corner with the help of my Myglam's eyeliner. Now I'm contouring my lips with the help of brown lip liner. So guys, I just wanted to say that now I won't be able to upload that much video every week like before, but I will try my best because I'm going out of the town. मैं थोड़ी busy होने वाली हूँ for 2.5 months at least, so I won't be able to upload video that frequently, so bear that with me and I'm so sorry for that, but I'll try my best to upload as much as video I can. And on top of that lip liner, I'm going to apply lipstick from Myglam. Guys, अगर आप लोग चाहते हो मैं कुछ recreate करूँ कुछ look, then you can still comment me in the comment section below. I would be very very happy to do that for you guys. इसके बाद मेरे पास जितने भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी था उसको सब मैंने तोड़ फोड़ के जोड़ जाड़ के मैंने कोशिश किया वो ऑक्सीडाइज वाला लुक देने के लिए as much as I have. So here you go guys, my final look with the jewelry. Never forget to apply makeup fixer after you are done with your makeup. So आज मैं matte makeup fixer यूज़ कर रही हूँ Revolution HD से. So never skip this part guys. तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, and then आपका कोई सजेशन हो that you want me to create that look, then do let me know that also. I hope you enjoyed this video as much as I did. अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी भी आपकी मदद की हो तो do share this video to your loved ones. Give your fat thumbs up. That will encourage me a lot to make a lot of videos like this. And if not subscribed to my channel, do subscribe. And yes, also I will be back with a brand new video soon. Till then, see ya.